CPU, the brain of the computer, it performs all the tasks. And guys, this is a cooling fan which keep the CPU cool and avoid overheating. Today we are going to explore an essential computer topic, hardware vs software. I will show you real example of hardware parts and then demonstrate software in action. So guys, I will show you real example of hardware parts and then demonstrate software in action. But before, let's first add a bit of theory and then move on to practical. Okay, so quick explanation of the two concepts, hardware and software. Guys, hardware, there are the physical components of computer. हार्डवेयर क्या चीज है? एक फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का. यू कैन टच एंड सी देम. आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, ये सब चीजें क्या है? आपकी एक फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. बट सॉफ्टवेयर, देयर आर द प्रोग्राम ऑफ एप्लीकेशन दैट रन ऑन द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को रन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. इवन दो यू कैन सी द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, you can't physically touch software. Example include MS Word, web browser and games. ऐसे ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम जिन पर वर्क करते हैं, MS Word, MS Office एंड हमारे और भी ब्राउजर्स, गूगल हो गए, क्रोम हो गए, ये सारी जितने भी होते हैं ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं. गाइस, नाउ वी विल एक्सप्लोर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द रियल हार्डवेयर इनसाइड द सीपीयू दैट मेक एवरीथिंग वर्क. चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हार्डवेयर का. एंड गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, इस वीडियो में हम सिर्फ हार्डवेयर के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे. ओके, दोनों ही वीडियो कंबाइन है, बट ये कि गाइज वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है और आप भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. इस वीडियो में हार्डवेयर के बारे में हम सिर्फ जानेंगे कि हार्डवेयर जो हमारा सीपीयू कैबिनेट होता है वो कौन कौन से पार्ट से जुड़ा होता है, कौन कौन से पार्ट हमारे हार्डवेयर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बनाने में काम आते हैं. ओके, हम दोबारा इस विंडो पर आएंगे. CPU cabinet. Now let's open it and see what's inside. So you can see here it. Guys, so first part is motherboard, the heart of the computer. It connects all internet parts together. And guys, second part is CPU, the brain of the computer. It performs all the tasks. And guys, this is a cooling fan which keep the CPU cool and avoid overheating. So there are RAM sticks, they give temporary memory so the computer run fast. This is hard disk drive, जिसे HDD भी कहते हैं. Guys, it store all data, files and software. Power supply unit. Guys, this box here is the SMPS. It gives power to all parts of the computer. And here you can see data cable and power cables, connectivity all parts together. Motherboard, CPU, RAM, hard disk drive, optional disks. Guys, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन. Cables and connectors.